मैम मीटिंग लाइव हो गई है। Assalamualaikum, my name is Isha Tariq, and today we are going to learn about IELTS. It's week two of the reading section of IELTS, and हम इन डेप्थ और ज़्यादा समझेंगे दैट हम किस तरह से अपनी रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं. And today we'll be focusing on matching information और matching features. ओके, सो उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे और भी ज़्यादा हम लोग स्ट्रेटेजाइज थिंकिंग देख रहे हैं कैसे हम लोग इसको ऑप्टिमल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. Okay, one thing more, like if we gonna like when we will move towards the uh, like these practice papers, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर कोई पहले रिपीट हो गया, मैम अंजा ने अगर करवा दिए तो हम चेंज कर लेंगे. ओके, so let's move towards this. I think हम last can you tell me suggestion हमें last में क्या सर मैम अंजा ने like डिस्कस किया था in the last session. मैम लास्ट में हमने मैचिंग वाले फिलिंग इन द ब्लैंक्स किए थी क्वेश्चन। Okay. Okay. और मैचिंग वाले भी किए थे, हाँ जी। एक। ओके, मैचिंग हेडिंग्स था, मैचिंग इंफॉर्मेशन था या फीचर्स? यस यस। ओके. ओके, तो हम इसी को दोबारा से देखेंगे. सो हमारे पास यहाँ मैचिंग इंफॉर्मेशन है. हाउ वी कैन सॉल्व, अगर हमारे पास आ जाता है तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग के पास ये वाला सेक्शन आता है फॉर मैचिंग इंफॉर्मेशन, सो इट विल बी हमें थोड़ा सा लाइक जो भी पैराफ्रेजिंग हुई होती है उसको समझना होता है सबसे पहले. उसके बाद हमें उस पूरे पैराग्राफ का आइडिया लेना होता है और आपको अंडरस्टैंड करना होता है. ना सिर्फ आपको सिर्फ उसको ट्रांसलेट करना है, मीन्स जैसे जब आप लाइक पढ़ रहे हैं किसी भी पैराग्राफ को तो आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, बिकॉज वी लाइक as like in Urdu you are translating that, and not just you have to translate it but also you have to understand it, like what uh, is like a specific idea about that specific passage, so we have to understand that also. Then also we have the purpose, like ये specific paragraph का क्या पर्पस है. ऑल्सो जब मैं ये सॉल्व कर रही थी तो मैंने एक चीज नोटिस की कि हमारे पास जहाँ ये पैराग्राफ आता है तो वो स्टार्टिंग, जब भी ये उन्होंने पैराग्राफ दिए हुए हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है. पहले वो स्टार्ट करता है किसी बात को, उसके बाद वो एंड पे कंक्लूजन देता है या एंड पे जो उसने कुछ एस्पेक्ट्स बताने होते हैं वो बताता है. तो इसका एक स्ट्रक्चर इस इंफॉर्मेशन में भी फॉलो हो रहा है. और दरम्यान में अगर उसने कोई आर्ग्यूमेंट देना होता है और या उसके रिलेटेड कोई रीजंस, कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना होता है तो वो उस तरह से कर रहा होता है. तो उसको भी हम लोग अपने जहन में रख सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है और इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स को रिलेटेड टू द क्वेश्चंस. ऑल्सो वी हैव the time pressure also we have to manage in such matching information, like questions or like these are the sort of questions we cannot say it MCQs, am I right? So उसके बाद हमारे पास है like कैसे हम लोग इसका लॉजिक जो है जो लाइक लॉजिक क्या होता है इसमें. हमारे पास एक मेन आइडिया होता है. ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और हमारे पास उसमें कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हो सकती हैं, कुछ हमारे पास उसमें किसी की रिसर्च हो सकती है, लाइक उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी होती हैं या कुछ उन्होंने वर्ड की एग्जांपल्स दी होती हैं कि लाइक देयर इज सम साइंटिस्ट ऑन दैट एरिया एंड ही रिसर्च्ड अबाउट दिस एंड these were the facts and these were the results and all that. So ये हमारे पास सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट हमारे पास कुछ कंपैरिजंस भी होते हैं एंड ऑल दैट, ओपिनियंस, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया. तो ये जो होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसका ये सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. वो कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, तो लाइक ऑल दीज
stuff are like that, they want to make that information longer or to confuse you using paraphrasing or something. So उन्होंने इस तरह की like arguments ऐड किए होते हैं उसमें. Then we have next thing, that how we can efficiently solve these questions. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई टाइटल दिया हुआ है तो वो पहले आप रीड आउट कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड है. ओके, एंड ऑल्सो स्टेप टू इज लाइक दैट, लाइक ऑल्सो यू कैन चेक आउट के कितने पैराग्राफ्स हैं, कितनी लंबी इंफॉर्मेशन है एंड ऑल दैट. ओके, then next thing is you can check that you can skim the paragraph even. आप चेक कर सकते हो कि क्या पैराग्राफ में डिस्कस, क्या टॉपिक क्या है और किस तरह से उसे क्या डिस्कस करना चाह रहा है एंड ऑल दैट. आप उसको आपने डीपली नहीं देखना, बस आपने 10 to 15 मिनट्स के लिए बस आपने उसको ओवरव्यू ले लेना है, जल्दी से स्किमिंग कर लेनी. एंड देन ओके, और एंड देन यू कैन राइट इट आउट ऑन द पेपर इवन. आप अपने पेपर पे भी राइट कर सकते हो कि क्या क्या आइडिया आ रहा है आपको, कि क्या पैराग्राफ ए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं. दिस इज पैराग्राफ ए बी सी डी एंड इवन इट कैन डाइफर ऑल्सो लाइक दैट. इट कैन बी लाइक स्टार्टेड फ्रॉम सी डी ई एफ जी. इट्स लाइक दैट. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पैराग्राफ ए ही पहले दिया होगा, वो आपके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको चेंज भी कर सकते हैं. सो दैट इज अ थिंग. आपको अपने पैराग्राफ का मैप बनाना है, आपने राइट डाउन कर लेना साथ साथ कि आपका जो मैप है, लाइक आपका पैराग्राफ ए जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव देना चाह रहा है, बी सी, इस तरह से आप एक छोटा सा आइडिया बिल्ड कर सकते हो. उसके बाद क्या करना है, हमने हमने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पहले, बस हमने एक स्पेसिफिक थोड़ा सा आइडिया बिल्ड कर लेना है. मे बी इट वुड रिक्वायर योर 30 to 40 seconds टू डू ऑल सच स्टफ, एंड देन यू कैन जस्ट मूव टूवर्ड्स questions and you can just read it out, and you have to deeply understand the question. Try to memorize even the questions, like what he's asking about and what is the like purpose and all that. You can just read it out and you can understand it and try to memorize it also. So these are the things. आपने questions को बहुत ज़्यादा और and you can even use highlighting over there, so that like it can be recalled when you will be learn reading all that stuff on the information part. Okay, so that is the thing. Then we have अंडरलाइन ऑल्सो. हमने जो भी एक्शंस, आप ये भी देख सकते हो. आई आई यूज टू डू दिस के मैं तो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन खुद से सही लग रही होती है कि मुझे ये लाइक अंडरलाइन करनी चाहिए, तो आई अंडरलाइन दैट. बट आप ऐसा भी कर सकते हो दैट यू कैन अंडरलाइन the actions, the times or the dates, like which are mentioned on that used to be, जो हमें pop out हो रहा होता है already, that this is like the information that can be highlighted. So you can just highlight that. It will depend on your preference also, that what you wanna highlight or not. Okay, द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने हाईलाइट कर लिया, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं या जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं दैट आइदर दे आर पैराफ्रेज्ड और द इंफॉर्मेशन आउट देयर कैन बी पैराफ्रेज्ड लाइक दैट. सो वी हैव टू डिटेक्ट दोज डिफरेंसेस, एंड अगर वो इस तरह से पैराफ्रेज भी हुआ है तो हमें वो सेम, अगर लाइक मीनिंग उसका सेम है तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है. उसके बाद हमने क्या करना है, उसको जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं. एंड हम लोग डिफरेंट सिनोनिम्स भी देख सकते हैं, दैट आइदर द सिनोनिम इज यूजिंग देयर एंड ऑल दैट. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज देन यू हैव टू गो थ्रू द पैराग्राफ. देन यू हैव टू गो थ्रू द पैराग्राफ डीपली. अब आपने पैराग्राफ्स को सही तरह से पढ़ना है और अब आपने देखना है कि क्या आइडिया मैच कर रहा है या नहीं. ओके, और रिमेंबर दिस थिंग कि हमारा जो यहाँ क्वेश्चंस होंगे उसमें ये भी हो सकता है कि जो मल्टीपल ऑप्शंस है उसका सेम पैराग्राफ भी हो सकता है. एंड वी कैन हैव ऑल डिफरेंट पैराग्राफ्स ऑल्सो. जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके सारे डिफरेंट पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, बट उसका सेम पैराग्राफ भी हो सकता है. ओके, दीज आर द क्वेश्चन वी कैन डू टुडे. सो यहाँ हमारे पास क्या है कि यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, तो हमारे पास मल्टीपल जो है लाइक स्टेटमेंट्स के हमारे पास सेम पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं. ऑल्सो देयर इज वन थिंग दैट these like all the statements are not in order.
ओके, ये सारी ऑर्डर में नहीं होगी, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं होगी, बिकॉज टू मेक यू कंफ्यूज। एंड आपने उसको खुद फाइंड आउट करना है कि वो किससे रिलेट कर रहा है और किस पैराग्राफ से रिलेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फोकस ऑन। अच्छा, अब आपने जब पैराग्राफ रीड आउट करने हैं तो आपने फोकस करना है कि यहाँ कोई कॉज या इफेक्ट तो नहीं हमें हमसे लाइक पूछा जा रहा है। आप यू यू कैन मेक ऑल्सो योर नोट्स ऑल्सो ऑन द पेपर। यू कैन मेक योर नोट्स लाइक इस पैराग्राफ में क्या बात हुई है। आप सिर्फ जो आपके की वर्ड्स हैं आप उसको राइट कर लें। और एग्जांपल्स अगर स्पेसिफिक हैं तो आप उसको उस पैराग्राफ का एग्जांपल ले लें कि इसमें एग्जांपल्स आ रही हैं, इसमें कुछ एवेलुएट हो रहा है, इसमें कुछ लाइक एवेल्युएशन इन अ सेंस, आपको कुछ एवेल्युएशन में क्या होता है कि आप कोई आपको टेस्ट होता है, राइट, किस चीज़ को टेस्ट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट्स बताते हैं कि इसको हमने इस तरह से देखा था। इफ दे आर डूइंग रिसर्च और समथिंग, if we did research on this and then we got these results and these are like good in this way and bad in this way, so these are like that. And then we have comparisons also कि हम लोग पैराग्राफ्स में देखेंगे कोई comparisons हो रहे हैं and all that, तो हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने स्मॉल से, आपने कंसाइज से नोट्स बना लेने हैं जल्दी से। एंड देन या सो देन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और आपने जो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन मेमोराइज किए होंगे, फिर वो आपको आप दोबारा से क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं और आप देख सकते हो कि इस पैराग्राफ में से कोई क्वेश्चन मैच हो रहा है या नहीं एंड ऑल दैट। एंड यू कैन देन start doing and start marking the paragraphs even. तो अब आप then the phase is there that where you can write answers and move on. So this is the strategy for solving the matching information, like questions and all that. Okay, so these are the things which. Okay, and here is also the paraphrasing. आपकी vocabulary में लास्ट में जब हमने आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वीक 1 डे 1 एंड 2 में हमने डिस्कस किया था कि आपको वोकेबलरी साथ साथ बिल्ड करनी है। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कि आपने रोज के जो है ना 10 वर्ड्स जो है ना वोकैब के आपने राइट करने ही करने हैं। आपने कहीं से भी उसको आप पिक कर ले, इवन यू कैन रीड आउट न्यूज़पेपर्स, द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, यू कैन इवन वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज, इवन यू कैन डू anything, but you have to write down 10 words on your notebook so that you can recall it and even you have to use that. तो आपने वो 10 वर्ड्स जो है वो रोज करने हैं ताकि आपके विकेबलरी इंप्रूव हो सके और आप उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी साथ साथ लिख सकते हो ताकि आप उसको डिफरेंट वे में यूज कर सको। ओके, so let's move forward and today we'll be solving this specific two we are aiming towards these two practice papers. Okay, let's solve this first. ओके, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर जिशान, कैन यू टेल मी कि ये वाला पेपर पहले डिस्कस हो गया या नहीं? दीज आर ऑल अबाउट ब्रीड ऑफ गॉड डॉग्स। नो मैम, ये नहीं हुआ अभी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ हमारे पास ब्रीड ऑफ गार्ड डॉग्स है। ये हमारे यहाँ हमारे पास टाइटल नहीं दिया हुआ है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का, तो हम लोग ये टाइटल रख लेते हैं कि ये हमारा टाइटल है। उसके बाद हम थोड़ी सी स्किमिंग कर लेते हैं। ओके, दिस इज सेइंग प्रेजेंस इज सफिशिएंट। अच्छा, यहाँ से आप इसके वर्ड्स ले सकते हो कि देखिए ये एविडेंस के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दैट गार्ड डॉग्स आर हैव न्यू रोल, इनके इनके रोल्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। ओके, यहाँ हमारे पास कुछ आइडियाज आ रहे हैं, राइट। दिस इज अ आइडिया अबाउट गार्ड डॉग्स के उनके कुछ न्यू रोल्स हैं एंड ऑल दैट। ओके, यहाँ भी एविडेंसेस को डिस्कस कर रहा है और साथ साथ रिसर्च जो जिन लोगों ने किया उसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है जो गार्ड डॉग्स पे हो रहे हैं, कि उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। स्पेसिफिकली इफेक्ट हमारा कीवर्ड आ गया है। उसके बाद यहाँ हमारे पास लास्ट में मैंने आपको कहा ये आप खुद ही ये कर लेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी, सॉरी, कॉन्सिक्वेंस होंगे। ओके, वी कैन से, सो हमारे पास यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस जो है लास्ट में डिस्कस हो रहे होंगे एंड दैट वुड बी अ थिंग, यू कैन जस्ट हाईलाइट इट। तो लास्ट में हमेशा वो हमें कॉन्सिक्वेंस देते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एंड ऑल दैट। तो दिस इज अ थिंग,
हमारे पास बेसिकली हमने स्किम कर लिया कि सबसे पहले वही गार्ड डॉग्स के बारे में बताएगा, ठीक है, और उसके क्या हमारे पास क्या लाइफ होती है उनकी, और क्या हमारे पास उनके एविडेंसेस क्या शेयर हुए हैं, एंड कैसे उनको स्किल्स दी जाती हैं, और क्या एविडेंसेस हैं, और क्या रिसर्च हुई है, और क्या रोल्स होते हैं उनके गार्ड डॉग्स के। ओके, और वो किससे इंस्पायर्ड है, लाइक आई थिंक दीज आर द cheetahs also. I have seen that is popping out. Okay, so these all are the things, and then there is scientists जिन्होंने research की है and all that, तो हमें थोड़ा सा idea हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास है कि you may use any letter more than once, you have to read out these information because these are also important, okay, so never miss out these things। Then we have here an example of how one predator has been protected by the introduction of lever stroke guards. Okay, so like हमें यहाँ कुछ example किस paragraph में दी गई है about the introduction of the guard dogs. Okay, so हमने वो इसमें करना है। Okay, देन हमारे पास नेक्स्ट है कि ऑप्टिमिस्टिकली सजेशन कहाँ दी गई है, जहाँ हमारे पास लाइक वी हैव पॉजिटिव डेवलपमेंट और इन द यूज ऑफ लीवर स्टॉक, सॉरी, लाइव स्टॉक गार्ड dogs। Okay, so we have to find out कि कहाँ हमारे पास optimistic suggestion है about these things। Then we have a description of how the methods used by livestock guard dogs help to keep predators away। Okay, so we have to find out that where the methods are discussed about these livestock guard dogs, and to keep these predators away। Okay, next thing is claim by different academics that the use of livestock guard dogs is successful for protecting the farmers। Okay, so farmer herds। Okay, so the farmer like the अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है that guard dogs they guard the farmers herds, and we have to find out that where these are claiming and where these are sporting even। so we have to basically इसमें claim ही हमने देखना है कि कहाँ claim हो रहा है किस उसमें। it doesn't include the sporting even, so we have to just find out the claim। then we have the reference to how livestock guard gain their skills। Okay, where there is a reference about this। Okay, so these all are the questions if you want to read out one like one more time to memorize it, but I think एक बार में जब आप पढ़ लेंगे तो आप highlight कर लेंगे, then it will be well and good। Okay, so let's move towards our information। Okay, so we have here today there are 50 breeds of guard dogs and all that। uh, इवन आप क्या कर सकते हो, जहाँ आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लगती है आप उसको ही रीड आउट कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है अननेसेसरी है तो आप उसको इतना ध्यान से लाइक ना करें या इस तरह से, तो आप उसको जल्दी भी कर सकते हैं। बट these dogs are raised from an early age with the animals, and they will be watching, and eventually these animals become the dog family, and dogs will be livestock interests and all। Okay, basically we have to find out that like how the predator has been protected, okay, by the introduction of bird dog। Okay, so ओके, आप लोगों को लगता है कि इस पैराग्राफ में फर्स्ट के लिए इंफॉर्मेशन है या नहीं?
आई गेस फर्स्ट के लिए इंफॉर्मेशन तो लाइक प्रोवाइडेड नहीं है इसमें। Yes, exactly. They are just doing about like उन्होंने specifically कहा है कि predators को हमने protect. It is not here. If predator is not here, even its synonym is not here. So that's why we can move towards the next one. Even okay, so they were saying that we have to define the example that how uh, like one predator has been protected. मैम ये ऊपर सी में आई थिंक फर्स्ट वाले का लग रहा है ये। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन पुर्तगाल बायोलॉजिस्ट सिल्वा हैज फाउंड दैट मोर देन 90% of the farmers participating. ओके, आई थिंक यहाँ उन्होंने कहा है कि कैसे एक प्रेडिटर, वो तो कलेक्टिवली बात कर रहा है, राइट? सो ही हैज अ रिसर्च एंड ही इज सेइंग कलेक्टिवली हियर। बेसिकली पैराग्राफ सी में क्वेश्चन लाइक जो स्टेटमेंट 3 है उसका आंसर है participation of how the method used by livestock guard dogs have to keep predators away. यस ये थ्री का है, इसमें मेथड्स बताया हुआ है लास्ट पे भी। If they are managed and used properly, livestock guard dogs are the most efficient control method that we have in terms of the amount of livestock. A मैम description. ये लाइक स्टेटमेंट 4 आप शो करेंगे, क्या है स्टेटमेंट नंबर 4? वी हैव टू प्रोवाइड एकेडमिक हम्म। रेफरेंस। Claims by different academics. बेसिकली नहीं 3 का नहीं होगा, ये 4 का होगा, पार्ट सी में, पैराग्राफ सी में। Claims by different academics that the use of livestock guard dogs is a successful way of protecting farmers herd। ये बेसिकली पार्ट सी में लाइक पैराग्राफ सी के अंदर प्रोवाइडेड है। This information, am I right? This is highlighting this. यस, या। Also here also this is the second claim. So these are the multiple claims here. So we can detect that it is C. So there is two claims in this paragraph C where it's saying 90% of the farmers, and here it's saying 65% of the herders. Okay, so we can detect like that. Also, okay, so by today has a new role to help the preserve the predators. It is hoped that the detection can make the farmers more tolerant. More than 90% of the cheetahs live outside. And from paragraph D, there is the answer of statement 1. Sorry, I Like, didn't. basically before the use of livestock guard dogs, cheetahs were used to be killed by the farmers, but after the introduction of dogs, they were like safe. This is the method. I think this is this thing because it is the method, how the method used, like Well, मैम ये how मैथ they are saying the method used by livestock guards to keep the predators away, not to like has protected. If you read the like statement 1, an example of how one predator has been protected by the introduction of livestock guard dogs. Yes, ma'am. I also think that.
Like if you read in paragraph D, the statement fourth line, last fourth line, when guard dogs were introduced, more than 90% of farmers reported a dramatic reduction in livestock losses and said that as a result they were less likely to kill predators. So you're saying like it's one statement? Yes. मैम ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इसमें ये देखें प्रोटेक्टेड है ना, यहाँ पे प्रिजर्व का वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने उसका। दोनों का मतलब सेम ही है। सेफ, टू हेल्प प्रिजर्व दी। Yes, but I प्रेडेटर्स। was saying कि हमारे पास यहाँ उन्होंने वन प्रेडेटर की एग्जांपल कहा है in one. So I was thinking of Um, that point ma'am, of cheetah yes. is a predator. It is like cheetah is mentioned only once and it is a predator, so like that is protected by the introduction of livestock guards. I think first one is D. Okay. Okay, for now we can consider this thing, but I think in my point of view it's little different. We can mark the statement 3 as D, and at the end we will check whether which statement goes with the paragraph D. Okay. Okay, let's read out the next one and then we can consider. Okay, here is like looking all the published evidences. There was one thing that was related to, okay, evidences by Bethany Smith at Nottingham Trent University in UK found that up to 88% of the farmers said that they no longer killed predators after using dogs, but warned that such self-reported results must be taken with a pinch of salt. What's more, it is possible that livestock guard dog merely displays a predator to unprotected neighboring properties where their fate isn't recorded. In some regions, we work with almost every farmer, but in other, only one or two dogs, say Ribeiro. If we are not working with everybody, we are transferring the wolf pressure to the neighboring herd, and he can use poison and kill an entire pack of wolves. Okay, so what do you think? Like, here is any optimistic solution or suggestion about positive development of livestock? मैम मुझे तो ये फोर का आंसर लग रहा है, जैसे यहाँ पे क्लेम्स बाय डिफरेंट एकेडमिक्स, यहाँ लिखा हुआ लुक एट दी पब्लिश एविडेंस। नो, एकेडमिक्स तो हम लोग तब कंसिडर कर रहे हैं ना जहाँ वो रिसर्च पार्ट वो बता रहे हैं एंड ऑल दैट, सो वी कंसिडर दैट वन। यू कैन सी हमारे पास यहाँ उन्होंने सारा वो उन्होंने ठीक, हाँ एकेडमिक्स जी। पार्ट बताया है, तो हम उसको वहां से कंसिडर कर रहे हैं। मैम आप एक बार फिफ्थ वाला क्वेश्चन शो करवाएं। विच पैराग्राफ? फिफ्थ वाला क्वेश्चन। Fifth statement. Fifth question. Okay. So a reference to how this is okay, skills के बारे में, how they gain their skills. I guess
Paragraph E is a bit tricky. We can like read the paragraph F. Yeah. Someone said कि second statement goes with paragraph E. I don't see any like optimistic suggestion about the positive development. Okay, we can read out this F Yeah. paragraph. So it is here like another concern is whether there may be unintended ecological effects of using guard dogs. Okay, studies suggest that reducing death of one type of predator may have a negative impact on other species. The extent of this problem isn't known, but the consequences are clear in Namibia. Cheetahs aren't the only species that cause sheep and goat losses there. Other predators also attacked in livestock. In 2015, researchers reported that in spite of the impact farmers obtaining a guard dog had on cheetah, number of jackal killed by dog and people actually increased. Guard dog have other ecological impact though they have been found to spread the diseases to wild animals, including endangered Ethiopian wolves and landscape of fear, and their mere presence can influence the behavior of prey animals. There is no optimistic. They're saying, I think they're saying negative about these. Am I right? Okay, guard dogs. Yeah, Yeah, it like they're they can talking the spread diseases. ecological impact. I don't think this paragraph goes with any statement. Just okay. So we can move to next even because it's just हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या डिस्कस हुआ है इस पैराग्राफ में आई थिंक डिस्कस हुआ है कि हमारे पास नेगेटिव क्या इम्पैक्ट था उनका उसने किस क्या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स थे गार्ड डॉग्स के और क्या हमारे पास उन्होंने लाइक दे spread some diseases in the species and all that and okay some endangered wolves like कुछ जो endangered animals थे उनको भी reduce किया and all that so it would be the negative impact so they okay we can move towards the next we have the evidence so far you can like write down even जब आप कर रहे होंगे तो आप अपने notes भी बना सकते हो साथ साथ कि किस paragraph में क्या discuss हुआ है then we have the evidence so far we have this G paragraph I think it's the last one okay it will be the conclusion that indicates that the consequences are not always negative. Guard dogs can deliver unexpected benefits by protecting vulnerable wildlife from predators, and for example, their presence has been protected from the birds and on the ground where foxes would normally raid them. I think it. What do you think? कि ये first का हो सकता है? Okay, because यहाँ उन्होंने एक example भी दी है. Okay, we can move. Indeed, Australian researchers are now using dogs to enhance biodiversity and create refuge for species threatened by the British. Okay, मुझे यहाँ लगता है कि ये optimistic suggestion है. What do you think about that? Because यहाँ उन्होंने जो negative बात है उसको उन्होंने oppose किया last में और उन्होंने अपना conclusion बताया है that what should be done next. Anyone wanna share suggestion on this? Yeah, I think we can like place the paragraph G in statement 2. Okay, Sir Zishan, what
What is your thinking about this? Basically, like if we read the statement and optimistic suggestion about the possible positive developments, and if we read the paragraph G last three lines, so if we can get this right, there may be a bright future. So basically, he's talking about the like possible development. Both are like in future tense. So I think this goes with the statement too. यस मैम, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये लास्ट से अगर हम इसे इंडीड ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर आर नाउ यूजिंग डॉग्स टू एनहांस बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से एंड तक देखें तो इसमें बताया हुआ है। एन एग्जाम Yes, exactly. We can do like that. Okay, so what is left is this के method कहाँ discuss हुआ है and skills. Okay. Okay, so we have to find out that where the methods used by livestock guard dogs. Okay, so for keeping the predator away. So we can read out there where the initial training is to make them understand that going to be their life says. Basically, this paragraph goes with the statement 5. Because Which line do you think? Like which line are you thinking like which is connecting towards this statement? uh, from second line, these dogs are raised from an early age till the but often their mere presence is sufficient because the dogs will place themselves between the livestock and any threat barking loudly. So basically, this is their training, and that's how the guard dogs learn, gain their skills. Okay. Like Dan Macon, a shepherd, is also saying their initial training is to make them understand uh, uh, that they need to protect the livestock while placing the dog between the livestock, and he will learn the skill how to chase the predator away. हाँ Yes. हाँ जी मैम, इसमें हमें ना स्टार्ट में मिल गया, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, रेफरेंस है ना इसका। Yes, exactly. You are right. But when I जब मैंने पहली दफा देखा तो मुझे ये वाला पैराग्राफ लगा है. तो can anyone negate this thing that why this paragraph is not for 3? मैम इसमें एक उसमें जो डी है, इसमें गार्ड डॉग्स हैव आल्सो हैव अ न्यू रोल। यहाँ पे रोल का नहीं, रेफरेंस का किया हुआ है जिक्र। और वो गेन्स कैसे अपनी स्किल को गेन कर रही हैं यहाँ पे बताया नहीं हुआ, यहाँ पे उसका रोल बताया हुआ। आई थिंक इस वजह से। Basically, there is a difference, a little bit difference between statement 1 and 3. Can you show me the statement 1? Statement 1. Yeah, statement 1 Yeah. is about what Basically, exactly? in statement one, they are saying like you have to tell the example about one predator which has been protected by the introduction of livestock guard dogs, right? And in statement three, they are saying like which method livestock guard dogs use to keep the predators away. But in the statement paragraph D, as before the introduction of the guards dog, cheetah were used to be killed by the farmers. So after the introduction of guard dogs, they were preserved and no more were killed by the farmers. So that's why this example specifically shows that these predators were like safe by the introduction of livestock guard dog. That's why I thought कि paragraph D will go this with this statement one. Can paragraph D be both for statement 1 and 3? Yes, I my question was this, why we shouldn't consider for 3 in this one.
I know like this would be more related to A, sorry, this first one B, but I was saying कि मैंने जब पहले इसको देखा है तो मुझे ये लगा कि ये होगा. So why like किस point से like where I am getting wrong or something कि मुझे ये कैसे हम कैसे ये देखें कि ये इससे related नहीं है. I was saying this one like why D is not related to 3 this because यहाँ उन्होंने कहा cheetahs are there and they are for responsible for animal losses. We have to describe the method. So 90% of the dramatic reduction in losses result were likely to kill predators. Basically, Okay, it was you just have an to see. example, am I right? Yeah, यहाँ it सिर्फ was for this example. example. There was no method mentioned, and specifically method used by the livestock guard dogs, right? So we have to see if any method used by the dogs, then we will go with that statement. But in this paragraph specifically, only example is showing about the cheetahs which were preserved. Yes, exactly. So this would we can categorize it in the like example category and all that. So we can consider for the 3 it would be B, am I right? The first one. Okay, so next we have to find out that where the dogs No, the reference no. would Ma'am, be B exactly. Yes. the fifth one is B. Yes, क्योंकि उसमें यहाँ ही उन्होंने मेथड भी डिस्कस किया है and I think the method is also related to the skills like how they got the skills also. So from that method they got the skills. So we Uh, can also read out that. yeah, you may say that. Okay, so the answer lies in these lines, am I right? Yes. So basically, the dogs will place them. These two lines shows that the method used by the livestock guard dogs to keep the predator away, and the next two lines, like the initial training, is shows that how dogs gain their skills. Yeah, exactly. Okay, so we can consider here B. Okay, अगर किसी को इससे कोई contradiction है in सारे answers से, so he can like argue on that even it would be helpful. Then we can just submit this if no one have any argument on this. Okay, so these are correct. Okay, so we can also consider हम लोग यहाँ थोड़ा सा conclusion भी discuss कर सकते हैं that what would be the optimized way. Okay, so ये तकरीबन हमारे पास यही होती है. आप इसको ना हमारे पास एक तो स्ट्रेटजी होती है कि हमने पहले एक स्ट्रेटजी बना ली है कि ये करना है हमने, लेकिन वो स्ट्रेटजी आप कैसे फॉलो कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उससे को प्रैक्टिस करो. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसको आप उतना ज़्यादा उस स्ट्रेटजी को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते जाओगे. So that is also a point. Yeah. We can, मैम ये yeah. सेकंड वाले का एक्सप्लेन मोर पे कीजिएगा क्लिक करा. Should I read out the explanation? It is here that the G means a happy idea about how livestock are. Okay, this was the optimistic suggestion to last वाला था हमारा, right? Last में जो paragraph discuss किया था, might help the wildlife and humans live together better. The correct answer is that because how guard dogs can protect wildlife from predators and help the biodiversity. It suggests that if we use guard dog properly and okay.
So this is a thing that they were saying that it is supporting, and they are saying that these are the specific lines. This is a Exactly. Taha ने भी mention किया था. Yes. Okay. So any suggestions anyone wanna share? हम लोग discuss कर सकते हैं next, but it will not be completed because we have less time. Okay, मैम what do इसको you जस्ट think कि हमारे पास जी जी इसको you मैम can जस्ट carry गो on. थ्रू कर लेते हैं, ये इस पे हाईलाइट कर लेते हैं कुछ वर्ड्स को और Okay, so yeah, okay sir. What do you think? I was saying कि आप क्या समझते हैं कि हमारे पास यहाँ जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज साइंस रिलेटेड है. मैंने तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ अभी तक देख रही हूँ वो साइंस रिलेटेड है. राइट? दिस वाज द like little biology related. Am I right? Basically, like in reading section, most of the like the passages are from the research or biological background or science background. Most of the time, these type of like passages from these domains. Yes, exactly. I was also noticing these things. ओके सो हमारे पास यहाँ जो है हमारा टॉपिक है अडेप्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. वी गॉट एन आइडिया लाइक व्हाट विल बी डिस्कसिंग है. पहले वो इंट्रोड्यूस करेगा कि क्या हमारे पास हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, एंड देन इन द मिड ऑफ दैट उन्होंने कुछ आई थिंक हमारे पास यहाँ. ओके हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. आप इवन ये भी कर सकते हो कि पहली पहली लाइन जो है ना वो रीड आउट कर लो, या उसमें से कोई वर्ड्स आप लोग देख लें फॉर highlighting at first for the skimming part. Okay, so यहाँ उन्होंने कुछ examples भी दी हुई हैं. I can see the example part here that उन्होंने कुछ examples दे के बताया हुआ है that कि हमारे पास क्या climate change हो रहा है और उसके साथ हमने adjust किस तरह से करना है. Okay, sea was a staple strategy. Okay, this is the strategy for coastal communities. But okay, so यहाँ कुछ strategies भी उन्होंने mention किए हैं कि हमारे पास क्या strategies हो सकती हैं for adapting to those effects. Okay, so then we have the next one D. I can clearly see this. यहाँ हमारे पास उसने कुछ contradiction perform की होगी. That's why it is saying like this, right? Unfortunately, something and all that. Okay, then we have as the flood water rose in the rice field. Okay, it's an I think it's an from first when I am seeing this. तो मुझे लग रहा है कि कोई उन्होंने और भी एग्जांपल कोट की हुई है यहाँ. Okay, or it's flood water related and all that, and some years also I can see the numbers. Okay, and some research also. Like they are explaining the some disasters or some kind of events. And Yes, they are quoting the examples about that, about the climate changes, the damages. Okay, they're mentioning now the Bangladesh for the climate change, and अब I think उस country के बारे में specific paragraph में बताया गया होगा. Or say that the results whenever these Asian countries are mentioned हम लोग थोड़े से ज़्यादा interested हो जाते हैं. Right? Okay, next thing is the Greg sports for Los Angeles. Okay, some officers. ओके सम आई थिंक यहाँ जो इन्होंने चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर के बारे में बात की है, तो यहाँ वो पॉसिबल सोल्यूशन बता रहे होंगे. राइट? कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है. पहले उन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, देन उन्होंने कुछ आई थिंक बांग्लादेश इज वेरी फेमस फॉर दोस क्लाइमेट चेंजेस एंड इवन लाइक पोल्यूशन और समथिंग इस तरह से कुछ वो ज़्यादा है फेमस. तो उसके बारे में उन्होंने कुछ कोट किया होगा एग्जांपल्स को. ओके सो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट थिंग इज ओके यहाँ हमारे पास पॉसिबल, और लास्ट में हमेशा ऐसे ही होता है कि कुछ सोल्यूशन बता रहे होते हैं या कुछ इस तरह से बता रहे होते हैं. ओके
सो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था about that, and let's read out the questions out now. Okay, so here we have how a type of plant functions as a natural protection of coastlines. ओके, तो ये पॉसिबल सोल्यूशन में होगा। मैं इस इंट्यूशन पहले बिल्ट ये कर रही हूँ कि ये पॉसिबल सोल्यूशन में होगा कि जहाँ प्लांट्स का मेंशन किया गया, तो इस तरह से हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो इट कुड बी द पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द क्लाइमेट चेंज। ओके, द प्रिडिक्शन अबाउट हाउ लॉन्ग इट कुड take the stop noticing of effects of the climate change. Okay, so could take to stop. Okay, क्या प्रिडिक्शन हो सकती है कि हमारे पास ये, आई थिंक ये पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा जहाँ वो अपना आर्ग्यूमेंट शेयर कर रहा है कि हमारे पास उसने कहा है कि क्या हो सकता है, कितनी देर बाद हम लोग ऐसा होगा कि हम लोग अपने इफेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को नोटिस ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं। सो इट कुड बी अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक। सो ये कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस हमने देना है टू द सोल्यूशन। ओके, और वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, कोई रेफरेंस हो फॉर द सोल्यूशन। आई थिंक ये हमारे पास ये भी हमारे पास कुछ लास्ट पैराग्राफ्स की तरफ, आई थिंक इट विल be directed. Okay, so next thing is a mention of technology used to locate areas most in the need of intervention. Okay. अच्छा, जहाँ टेक्नोलॉजी मेंशन हुई हुई है वो हमने फाइंड आउट करना है। Okay, let's find out the first one. The plant functions for natural protection of coastlines. Okay, I think in this first paragraph they are just mentioning that what is the introduction, and what is basically climate changes, and what things are affecting that, like CO2 is affecting it. And okay, they are uh, around forecasting. Okay, they are telling about the forecast of 40 years, and the ice caps are also melting due to that rise of global warming and all that, and extreme impacts. Okay, तो it's, I think, I don't think so कि पहला पैराग्राफ जो है हमारे पास like it's related to first one. Even you can check out कि वो किसी और से relate कर रहा है या नहीं। नो मैम। ओके, सो मेरे इंट्यूशन एक और मुझे, लाइक मैंने तो पहले ही इनको इस पैराग्राफ को तो मैंने कर दिया लाइक एक्सक्लूड फॉर ऑल दैट, बट दिस स्पेसिफिक थिंग कि हमारे पास कितना हाउ लॉन्ग इट will be, because there was mentioning the year, so that's why I read it like one more time. तो बस यहाँ वो यही मेंशन कर रहा है कि जो CO2 है वो हमारे पास 40 years तक, या ये ग्लोबल वार्मिंग की फोरकास्ट है जो अगले 40 years तक जो है वो रहेगी। ओके, देन हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल है, वी कैन रीड आउट द पैराग्राफ बी। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? It's 4 minutes. Okay, we have in Miami Beach, Florida, USA. Seawater isn't just breaching the island; cities fall. It's seeping up through the ground and all that and woods. Okay, मुझे यहाँ तक ये लगता है कि जो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है उसका जो उसके स्पेसिफिकली जो भी सोल्यूशन होता है वो लास्ट में देते हैं ये लोग, कि या कुछ इस तरह से होता है तो वो लास्ट में होता है। बट वी कैन रीड आउट दीज थिंग्स इवन। मैम, जी, वो मैम सजीशा। अंदर ने कल बताया, वो बता रही थी कि मतलब या तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर स्टार्ट में मिल सकता है तो या एंड पे मिल सकता है। हम जो भी क्वेश्चन मतलब अभी तक सॉल्व किए हैं तो वो मोस्टली ऐसे ही है कि लास्ट में या दिया हुआ आंसर या स्टार्ट में ही है। यस, सो आप लोगों ने देन सीक्वेंस फिर हम उन्होंने लास्ट से शुरू किया था या फर्स्ट और लास्ट देखा था पहले, या फिर हम इस तरह से जा सकते? मैम वो तो इधर कीवर्ड, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें कीवर्ड उन्होंने हाईलाइट कर के ना तो फिर सारे कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए थे और फिर पैरों को देख लेती थी, अगर किसी में मिल जाता था तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट मूव करके
फर्स्ट या Exactly. स्कीमिंग कर लेती थी ना, जैसे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट 2 से 3 लाइन देख ली, लास्ट देख ली, तो फिर अगर कुछ मिलता हुआ उसमें, इस तरह सॉल्व कर रही थी वो। Yes, exactly. Because मैम अंजा ने अभी कुछ डेज बाद ही उनका उनका आइट्स है, so he'll be giving that. आप लोग आप मेंशन कर सकते हैं कि आप लोगों का आपने कब टारगेट करें किस मंथ में for the आइट्स. Even you can write in the chat that which month you are targeting to do the IELTS. Okay, so Uh, okay. I think for the statement two, we can like read the paragraph B, second last line. We note that in 20, 30, 40 years, we will need to go back in there and adjust to the changing environment, she says. Okay, so we will need to go back in there and adjust the changing environment. सर ये सेकंड का कह रही हैं आप? Yes, he is talking about the Yeah. second state. your prediction about how long it take. Yes, sir, can you give your points? आपको क्यों ये supporting लग गया है? Give your points again. Because like upcoming paragraph may like they discuss about the any specific events or the solutions. In statement two, they are like saying, okay, we have to predict that we will stop noticing the effect of climate change, like we will be adjusting in climate changing condition, and we won't be noticing anymore about the climate changing. So that's why like in next 20, 34 years we will be used to with this changing environment. Okay, yeah, and now I got that. That they are saying कि हमारे पास maybe in those years हम adjust हो जाए environment से और हमें लगे ही Yeah, ना that if something is changing or not. This thing you wanna convey, am I right? yeah. Okay, we can consider it here. I think the time is also over, so we can just give this. Shouldn't we can just submit it? हम check कर लेते हैं. Should we submit this? That this second one is correct. Okay, the correct is A. Maybe हमें इसको और in depth देखने की जरूरत थी. Okay, why A2 will be? Okay, I think my intuition was correct. मैंने I was saying that there is 40 years mentioned here. Yeah. Okay, the B. Okay. Even if you show all CO2 emission, we could continue to see impact of should already cities in industrial But I time. think इन्होंने twist इसको बहुत ज्यादा किया हुआ है. That's Yeah, why. I thought like it just an opening paragraph with just Hmm. introduction of the climate change. Paraphrasing is there so Yeah, much. Okay, we can consider this for tomorrow. हम इसको yeah. Okay, दोबारा से कल देखेंगे. Okay. So I sure. think the time is already over, sir. You can just stop the live sharing also. Okay, ma'am. Okay, so that's all about today's session, and we did we did the practices related to matching information, and I hope in the next lecture we'll also discussing about like matching features even, and उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, and I hope you will practice all these tests because practice is the key for this all these tests, and you can improve and optimize your strategies.
सो दैट्स ऑल. अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन जस्ट आस्क ऑन द स्लैक इवन. एंड मैम अंजा एंड आई ऑल्सो कंसिडर कि हम लोग, इवन सर जीशान विल बी आंसरिंग यू ऑन स्लैक. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो रिलेटेड टू द सेशन. सो दैट्स ऑल. एंड